So, beta, we are going to be doing May June 2019 paper 21 today. सही है. The first question says कि group 2 elements share common chemical properties, and then it gives a statement. ठीक है कि calcium it reacts more quickly than magnesium because more energy is required to remove the outer electron in magnesium compared to calcium. ठीक है. And then they even give a contradictory statement कि यार ऐसा होना नहीं चाहिए. This shouldn't be possible कि more energy is required to remove magnesium because calcium atoms have a greater nuclear charge. So even though they have a greater nuclear charge, still more energy is required to remove one electron from calcium. Why? It is because if you look at magnesium, magnesium has a total of three shells. ठीक है. Magnesium has three outer shells. ठीक है. Um, जो मैग्नीशियम के आउटर शेल्स होते हैं, द आउटर शेल्स ऑफ मैग्नीशियम आर थ्री. ठीक है. एंड दे आर क्लोज टू वन अनदर. ठीक है. दे आर क्लोज टू वन अनदर. whereas the shells of calcium, they are four. ठीक है. There are four shells of calcium, and the last one is really big. ठीक है. सही है. तो the four shells of calcium, they make they increase the atomic radius by a lot. ठीक है. तो एटॉमिक रेडियस जो है बहुत बड़ा होता है. तो इस वजह से आपके पास जो है इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होता है. ठीक है. अब ये सवाल है 2 नंबर का. तो खाली एटॉमिक रेडियस बड़ा होता है कहने पे यू वोंट पॉसिबली गेट द कंप्लीट मार्क्स. सो व्हाट वुड यू डू इंस्टेड? You will have to inform the atomic radius is large, all right, and there is increased shielding effect because the greater number of shells also increase the shielding effect. ठीक है. सही है. तो we're going to say that magnesium atoms magnesium has fewer number of shells, meaning it has a smaller atomic radius and less shielding effect. उसका एटॉमिक रेडियस भी कम होता है और शील्डिंग इफेक्ट भी जो है वो कम होता है. राइट. बिकॉज ऑफ दैट हमारे पास ये नजर आता है कि इलेक्ट्रॉन इज नॉट लॉस्ट एज इजीली फ्रॉम मैग्नीशियम देन इट इज फ्रॉम कैल्शियम. ठीक है. Then the next question says 0.001 mole of strontium reacts with an excess of cold water. When the reaction is complete, a colorless solution is seen. Construct the equation for the reaction of strontium with cold water. Include state symbols. ठीक है. So strontium reacting with cold water to produce a colorless solution, and we have to have state symbols. तो बेटा स्ट्रॉन्शियम का सिंबल पीरियोडिक टेबल से देख ले, अगर आपको नहीं आता वैसे स्ट्रॉन्शियम का सिंबल क्या होता है? एसआर. Because it is a metal, it will be solid right now, and it is reacting with H2O. H2O is liquid. ठीक है. And what is it going to produce? It's going to produce strontium hydroxide, right? SrOH whole twice. Strontium hydroxide, SrOH whole twice. ठीक है. And along with that, अच्छा इसका स्टेट सिंबल भी लगाना है aqueous, and along with that obviously a gas is produced always, and that gas is hydrogen gas. ठीक है. हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होती है साथ में, वो भी प्रोड्यूस हो गई. ठीक है. this is not complete yet. You'll have to balance the equation. There are two oxygens and 2 plus 2 4 hydrogens. Here there are two hydrogens and one oxygen. तो यहाँ पे 2 लगेगा ताकि equation completely balance हो जाए. All right. Then we have the next question. 0.005 mole of calcium and 0.005 mole of strontium are added separately to two beakers. Each beaker contains 100 centimeter cube of cold water. At the end of each reaction, a white solid and a colorless solution are seen in both beakers. ठीक है. तो वो क्या रहा है, वो बोल रहे हैं कि आपके पास एक कैल्शियम एक स्ट्रॉन्शियम के दो अलग अलग बीकर्स बनाए गए. ठीक है. और उनके अंदर 100 सेंटीमीटर क्यूब कोल्ड वाटर डाल दिया गया.
Predict which element, calcium or strontium, produces the most alkaline solution. Explain your answer. ठीक है, so which one will form the more alkaline solution? So beta, alkaline solution will depend upon the solubility of the hydroxide. The hydroxide which is more soluble will produce more alkaline solution. Now in your notes you should remember that what I explained there is that डाउन द ग्रुप टू, ठीक है, कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम ग्रुप टू के हैं, राइट, कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम ग्रुप टू के हैं। कैल्शियम ऊपर आता है, उसके नीचे स्ट्रॉन्शियम आता है, ठीक है। डाउन ग्रुप टू, आई सेड solubility of hydroxides increases, meaning the member at lower level in the group is going to be more soluble than one at upper level, ठीक है। तो calcium hydroxide will be less soluble, strontium hydroxide will be more soluble. What does that tell us? It tells us that it tells us that strontium hydroxide will show a higher degree of ionization, मतलब वो easily dissolve होने की वजह से higher degree of ionization of OH negative ions रखेगा, and that just spells out what? Spells out that this strontium hydroxide will have a higher pH, ठीक है? It will be more alkaline. So we are going to say that strontium will have the more alkaline hydroxide as solubility of hydroxides increases down the group, ठीक है। First off, I think that is sufficient. The next question says, describe one observation when magnesium carbonate is added to excess dilute sulfuric acid. What is the one observation that you can say about magnesium carbonate when it is added to dilute excess sulfuric acid? Beta, magnesium carbonate MgCO3 is reacting with sulfuric acid. ठीक है, you want to talk about one observation. You want to talk about one observation. Well, मैग्नीशियम कार्बोनेट बनता है मैग्नीशियम सल्फेट बनता है MgSO4, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर बनता है, राइट। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ये गैस है, ठीक है। अ गैस इज फॉर्मिंग, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हैं? अ गैस इज फॉर्मिंग। तो इसको किस तरह लिखा जाता है? एफरवेसेंस, EFFERVESCEN एफरवेसेंस ऑफ आ। एंड ओ लेवल्स और आईजीसीएसई से सिखाते हैं, हम डायरेक्टली नहीं बोलते कार्बन डाइऑक्साइड। ऑब्जर्वेशन में हम ये नहीं लिखते कि कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुई। वाई? क्योंकि इन ऑब्जर्वेशन यू डोंट नो कि इट वाज कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज कलरलेस, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का तो अपना कलर होता ही नहीं है। तो हाउ वुड यू नो कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है? तो यू विल नॉट से कि कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस डायरेक्टली, ऐसे नहीं बोलते कि कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस, बल्कि हम क्या करते हैं, हम आंसर तरीके से करते हैं। वी से दैट अ कलरलेस गैस इज इवॉल्विंग, ठीक है। एफरवेसेंस ऑफ अ कलरलेस गैस, एफरवेसेंस, एफ effervescence of a colorless gas that, अब हम ये कार्बन डाइऑक्साइड की कंफर्मेटरी कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं, विच वी कैन डू इन लैब, ठीक है। Carbon dioxide turns lime water milky. It turns lime water cloudy. So we say that effervescence of a colorless gas that turns lime water milky is produced. All right. So we can just write it as a statement. What will be observed? Effervescence of a colorless gas that turns lime water
milky. Alright, that is one thing that you can write. ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, ये जो है ये सॉल्युबल होता है, मैग्नीशियम सल्फेट। वाटर जो है बेटा ये क्या होता है, ये लिक्विड होता है। ठीक है, अच्छा ये तो एसिड है, ये हमेशा AQUEOUS एक्वस होगा, राइट। ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल होता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। अनदर अनदर ऑब्जर्वेशन कुड बी दैट वी विल सी सॉलिड डिसॉल्विंग। ठीक है, सॉलिड विल बी, वी वुड ऑब्जर्व सॉलिड dissolving. ठीक है, anyways on to the next question. Element X is a metal. X reacts with oxygen to form a black solid oxide. The oxidation state of X in this oxide is +2. The carbonate of X, XCO3, is a green solid. It decomposes on heating to form the oxide and colorless gas. From the information given, state two similarities and one difference that metal X and its compounds have with group two metals and their compounds. Such an easy question. बहुत ही आसान सा सवाल है, ठीक है। देखिए बेटा, हमें बताना है सिमिलैरिटी इस मेटल की जो कि वी डोंट नो एक्स है, ठीक है, कि ग्रुप टू से कितना सिमिलर है। वेल तो फर्स्ट थिंग, ग्रुप टू ऑक्साइड्स +2 कैटायन के होते हैं, ठीक है। तो ग्रुप टू एलिमेंट्स form oxides with a +2 oxidation state. Group 2 form oxides with a +2 oxidation state। ठीक है, अच्छा जी, उसके अलावा ऑक्साइड +2 का हो गया। द कार्बोनेट ऑफ एक्स XCO3 इज अ ग्रीन सॉलिड, ये डिफरेंस हो गया। ठीक है बेटा, क्लियरली पता होना चाहिए कि ग्रीन कलर या कोई भी कलर्ड कंपाउंड्स is a character of transition metals, right? Colored compound is a character of transition elements, right? तो ये हम डिफरेंस में लिख सकते हैं कि X forms a colored compound। ठीक है, आगे हम क्लैरिफाई कर देते हैं। ग्रुप टू metals form white compounds या colorless solutions। ठीक है, फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये सिमिलैरिटी नहीं थी तो डिफरेंस। तो उसका आगे क्या लिखा है, डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग टू फॉर्म ऑक्साइड एंड अ कलरलेस गैस। कार्बोनेट की बात हो रही है कि द मेटल कार्बोनेट ऑफ एक्स XCO3 decomposes on heating and produces metal oxide and colorless gas which is carbon dioxide. This is a similarity, बिल्कुल it follows the same thermal decomposition pattern as group 2। ठीक है, सही है। तो it is also thermally decomposed. It is also thermally decomposed like group 2 carbonates to yield carbon dioxide and metal oxide। फुल स्टॉप। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है
राइट द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ एक्स। ऑक्साइड ऑफ एक्स क्या होगा बेटा? ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स का अभी अभी पता चला, एक्स का फॉर्मूला +2 है। ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है -2। व्हेन बोथ द चार्जेस आर सेम, बोथ द ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर सेम, द फॉर्मूला जस्ट बिकम्स XO। ठीक है, 1:1 के रेशो में यू राइट द एलिमेंट्स विद वन अनदर। उसके बाद लिखा हुआ है राइट एन इक्वेशन फॉर रिएक्शन ऑफ XCO3 व्हेन इट इज heated। When XCO3 is heated, what will form? We just discussed that XCO3 metal carbonate, when it heats, it decomposes into metal oxide and colorless gas. ठीक है, तो we say that XCO3 solid, when it is heated, it produces XO metal oxide, and along with that it produces carbon dioxide. ठीक है, metal oxide remains solid, carbon dioxide is gas. This is thermal decomposition. This is called thermal decomposition. I hope that makes sense. But if any of you have any questions, I suggest के just turn your mic on and ask ahead. ठीक है. Next question says magnesium silicide Mg2Si is a compound made by heating magnesium with sand. Draw dot and cross diagram to show the arrangement of outer electrons present in the formula unit of Mg2Si. Assume magnesium silicide is an ionic compound. बेटा ionic compound के अंडरस्टैंडिंग के साथ डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनाने को बोल रहे हैं। Mg2Si, Mg2Si का मतलब ये है कि आपके पास दो मैग्नीशियम होने चाहिए। सही है। और उनके आउटर शेल बनाना लाजमी होगा। ठीक है, तो मैग्नीशियम एक, एंड डुप्लीकेट दिस, एंड ये दूसरा। ठीक है, एंड यू आर गोइंग टू ड्रॉ इट लाइक दिस। ठीक है, alright. And what will be the oxidation state of magnesium? Each magnesium would have lost 2 electrons because they are group 2 elements, +2 and, oops, sorry, +2, meaning their outer shells will now be complete because the outer shell is essentially their inner shell. ठीक है, तो this is their outer shell, what it looks like. ठीक है, and now we are going to go ahead and draw silicon. ठीक है, there is only one silicon at one silicon element. ठीक है, someone's trying to join, 1 second. अच्छा जी, तो there is going to be one silicon atom. ठीक है, which will be the ion. अब जो silicon है, oops, what will happen to silicon now? ठीक है, ये आपको समझना जरूरी है। सिलिकॉन के साथ अब क्या होगा, या सिलिकॉन के अंदर सिस्टम क्या होगा। ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट सिलिकॉन बेटा, यू शुड नो सिलिकॉन इज इन ग्रुप 4। ठीक है, पीरियोडिक टेबल आपके पास होना चाहिए। सिलिकॉन जो है वो आपका ग्रुप 4 में होना चाहिए। ठीक है, ये पहली बात। और दूसरी बात ये है कि सिलिकॉन अगर क्योंकि ग्रुप 4 में है, तो इट शुड हैव 4 electrons in its outer shell only, right? It should have 4 electrons in its outer shell only. And judging by this, magnesium is the one that is losing electron. So silicon will be the one that will be gaining electron with a -4 charge. ठीक है, and how many electrons will it gain? 2 electrons from one magnesium and 2 electrons from the other magnesium. It will gain a total of 4 electrons. It will gain a total of
4 electrons. I hope that makes sense. This will be the ionic bonding, yeah, dot and cross diagram of the ionic compound Mg2Si. Mg2Si. ठीक है. Next question says, when solid Mg2Si is added to water, silane gas SiH4 and a solution of magnesium hydroxide are produced. Construct the equation for this reaction. Include state symbols. So they are saying कि magnesium Mg2Si इसको कहते हैं क्या? मैग्नीशियम सिलेन कहते हैं, मैग्नीशियम सिलिसाइड कहते हैं. मैग्नीशियम सिलिसाइड when it is added Mg2Si, when it is added to water, which is H2O, ठीक है, um, what happens is silane gas is produced, SiH4, ठीक है, and a solution of magnesium hydroxide are produced, ठीक है, plus MgOH whole twice, ठीक है, MgOH whole twice. Why do I write MgOH whole twice? But it should be common knowledge now that magnesium always loses 2 electrons because it is from group 2, and hydroxide has a -1 charge. The polyatomic ion 2 इधर आएगा 1 इधर जाएगा. So this is why you have MgOH whole twice, ठीक है, and SiH4. Now you have to write state symbols. So let's write state symbols. Mg2Si जो है वो आपके पास सॉलिड Mg2Si था, ठीक है, तो ये हो गया सॉलिड, ठीक है, सही है. H2O will be liquid. H2O will be liquid. SiH4 is going to be gas. SiH4 is going to be gas, and MgOH whole twice is going to be aqueous. ठीक है, MgOH whole twice is going to be aqueous. Why MgOH whole twice is going to be aqueous? क्योंकि solution लिखा हुआ है और सीरियन के साथ gas लिखा हुआ है, तो we had to include state symbols, but everything was already included. Now what is not mentioned over here is the balancing of equation, which is not completed. You'll have to put a 2 over here बेटा, ताकि यहाँ पे 2 मैग्नीशियम है, यहाँ पे भी 2 मैग्नीशियम हो सके. when यहाँ पे 2 मैग्नीशियम हो गए, तो what will happen now? Now there are 4 and 2 twos are 4. 4 and 4, 8 hydrogens, and 2 twos are 4 oxygens. ठीक है, 4 oxygens and 8 hydrogens. How can you balance that? By putting a 4 over here. The amounts of hydrogen and oxygen are also now balanced. Next question says, suggest with reference to structure and bonding why SiH4 is a gas at room temperature. Why is SiH4 a gas at room temperature? First of all, you always give a question like this an introductory line. ठीक है? What is usually the introductory line? If something is gas, then it must have a simple covalent structure. So we will say that SiH4 has a simple covalent structure. And now you can see that SiH4 kind of resembles CH4, and we know that CH4 is non-polar, right? Meaning it has no dipole moment, no dipole moment, right? So we'll say, so SiH4 has a simple covalent structure with zero dipole moment. Full stop. This means it is non-polar and can only have London dispersion forces between its molecules which are very weak intermolecular forces of attraction. ठीक है, they are very weak intermolecular forces of attraction. Now the next question says
The table shows electronegativity values of carbon, hydrogen, and silicon. Carbon की electronegativity is 2.5, hydrogen is 2.1, and silicon is 1.8. Carbon, hydrogen, and silicon hydrogen bonds have weak dipoles. All right, they're saying that they have weak dipoles. Use the electronegativity values in the table to show the polarity of CH and SiH bonds. ठीक है? तो polarity, how will it work? More electronegative element is always partial नेगेटिव. ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज ऑलवेज पार्शियल नेगेटिव. ठीक है, फुल स्टॉप. तो अब कार्बन हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? यूल से सर कार्बन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सो इट शुड बी पार्शियल नेगेटिव. दिस शुड बी पार्शियल पॉजिटिव. Over here, silicon and hydrogen, the more electronegative element is hydrogen now. It will be partial negative and silicon will be partial positive. This was very common and easy knowledge. ठीक है. Next question goes, explain why methane CH4 has no overall dipole moment. बेटा अभी अभी यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा था कि जीरो डायपोल मोमेंट होता है SiH4 का. Even though we see कि Si and H have different electronegativities, but overall there is no dipole moment. ठीक है, to explain it, I'll explain for CH4 because the question has arrived. C H H H H. ठीक है, dipole moment basically means the difference in polarity from one region of a molecule to the other. ठीक है, यानी कि if we go from top to bottom of the molecule, is the polarity changing? यानी कि is the top more negative than the bottom? ठीक है, या फिर if you're going from left to right of a molecule, is the polarity changing? Is the left negative and the right positive? ठीक है, या is the polarity changing from bottom to top? Well, it's the same as going from top to bottom. ठीक है, मतलब one way or another is the polarity changing in the molecule. ठीक है, that is what dipole moment basically means. The thing is, when you have structures that are symmetrical, ठीक है, and that have same electronegative elements on the outer rim, ठीक है, they usually cancel out the polarity of bonds. ठीक है, जैसे कि मिसाल के तौर पे this shape is a tetrahedral shape. ठीक है, in which the opposite sided polarity, ठीक है, the polarity is going to be cancelled. ठीक है, the polarity is going to be cancelled. If you look at it, you can't really show the direction of polarity, the dipole moment. It can't be this way, right? Because this inward arrow cancels this inward arrow. They are in opposite directions. Similarly, this inward arrow will cancel this inward arrow, right? So that we will say that methane has no overall dipole moment because it is a tetrahedral molecule. ठीक है, तो methane is a tetrahedral molecule. ठीक है, so what does that mean? Meaning the partial charges, the partial positive charges of opposite hydrogens cancel each other out first. ठीक है, I hope that makes sense. Next question says SiH4 reacts in air without heating, but CH4 must be ignited before combustion occurs. SiH4 plus 2O2 gives SiO2 plus 2H2O. CH4 plus 2H2O gives CO2 plus 2H2O. Suggest with reference to bond energies from data booklet. Well, we do not have data booklet. Why SiH4 reacts in air without heating, but CH4 must be ignited. Okay, I know the answer. ठीक है, you guys should also know the answer. A more reactive element has lesser bond enthalpies. ठीक है, so मतलब the SiH bond, मतलब ये जो SiH bond है, ठीक है, ये आसानी से ब्रेक हो जाता होगा. दिस बॉन्ड कैन ब्रेक इजीली कंपेयर टू द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड. ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग. ठीक है, सही है. तो
यहाँ पे लिख देते हैं, ये बात यहाँ पे लिख देते हैं। वीक बॉन्ड, आई डोंट नो द वैल्यूज, ठीक है। द वैल्यूज मस्ट बी रिटन इन द डाटा बुकलेट, वी डू नॉट हैव द डाटा बुकलेट राइट नाउ। कार्बन हाइड्रोजन मस्ट बी द स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, ठीक है, which means it does not break easily, ठीक है। तो we are going to say um, suggest with reference to bond energies from data booklet why SiH4 reacts in air without heating, ठीक है। SiH4 is more reactive than CH4 as the bond enthalpy of SiH is less than CH, meaning less energy is required to break it and initiate a chemical reaction. Full stop. Next question लिखा हुआ है silicon dioxide reacts with hot concentrated sodium hydroxide. Identify the two products formed during this reaction. Better silicon dioxide is considered a very weak acidic oxide, right? This is considered a very weak acidic oxide, ठीक है। And acidic oxide when they react with alkalis, when they react with alkali, they produce two things, ठीक है। They produce two things and those two things are salt and water, ठीक है। This equation of silicon dioxide reacting with sodium hydroxide, this equation is given in my IGCSE O levels notes as an example, देखें। तो यहाँ पर तो I don't remember giving this equation as an example, ठीक है, but you guys should know that the reaction goes a little like this. Sodium hydroxide plus silicon dioxide SiO2 and you will produce Na2SiO3 sodium silicate, ठीक है। Sodium silicate will produce and along with that a molecule of water is produced because you want to balance the equation by putting a 2 over here, ठीक है। तो आपके पास जो सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो यू वांट टू आइडेंटिफाई टू प्रोडक्ट्स, तो दिस इज वन प्रोडक्ट, दिस प्रोडक्ट इज सोडियम सिलिकेट and this product is water, ठीक है। बेटा we know that silicon dioxide behaves like an acidic oxide and forms a silicate ion when it reacts with an alkali or a base or something similar. How do we know that? Because silicon dioxide was also reacted with calcium oxide in the blast furnace in extraction of iron in your IGCSE O levels, ठीक है। सही है। तो एट दैट टाइम आप कैल्शियम ऑक्साइड के साथ सिलिकॉन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करा के कैल्शियम सिलिकेट बनाते थे, CaSiO3 कैसियो, राइट, ठीक है। तो थिंग्स शुड बी रिंगिंग सम बेल्स। तो ये थोड़ा सा रेपिटेशन थी। उसके बाद लिखा हुआ डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। तो वी नो व्हाट द बिहेवियर ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज, वी ऑलरेडी मेंशनड इट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज बिहेविंग लाइक अ एल्कलाई, ठीक है। सिलिकॉन, सॉरी नॉट एल्कलाई, एज एसिड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड behaves as an acid, right? So silicon dioxide was behaving as an acid in this reaction. The next question goes, construct an equation for second ionization energy of argon. Wow. So directly without any introduction, they've given us a question, construct an equation for second ionization energy of argon. Second ionization energy means that argon must have already lost its first electron, right? ठीक है, that is why we are on second ionization energy now.
तो टू स्टार्ट द first second ionization energy, we should realize that AR should already be +1, it should already be gaseous, ठीक है, and arrow, it will form AR gaseous +2 plus electron, ठीक है, it should be like this. I hope that makes sense, ठीक है. तो already you should remember that over here if it says second ionization energy, then argon must already have lost one electron, it should start with Ar +1, ठीक है. The next question says the graph shows successive ionization energies for the element argon. All right, complete the graph uh, with prediction for the eighth and ninth ionization energy of argon, use a cross for each data, ठीक है. एट्थ एंड नाइन्थ, ऑलराइट, तो एट्थ और नाइन्थ आपके पास आयनाइजेशन एनर्जीज के लिए आपको प्रेडिक्ट करना है, ठीक है. तो बेटा देखें एट्थ का इट शुड बी क्लोजर टू सेवन, राइट, व्हाई, बिकॉज एट्थ विल आल्सो बी इन द सेम शेल एज द फर्स्ट सेवन इलेक्ट्रॉन्स आर, ठीक है. तो आई गेस इट शुड बी समवेयर लाइक अराउंड हियर, मे बी हियर, आई थिंक दिस कुड बी इट. सही है. This could be the eighth one. Now the ninth one is going to be from a new shell. So the ninth one should be very high. Just like 10th is high, ninth should also be very high. So I think ninth should be somewhere like over here, 43,000. यहाँ पे आप बनाएंगे तो it will be considered correct. ठीक है. We should know that argon has first eight shells. Sorry, first eight electrons of argon will be from same shell. Therefore, the jump in successive ionization energy, first eight electrons of argon will be from same shell. Therefore, the jump in successive ionization energy will be between eighth and ninth electron, as can be seen from the diagram. Ninth electron and eighth electron. ठीक है. I hope that makes sense. उसके बाद next question says the energy value required to remove the first electron from an atom of argon is circled on the graph. Sketch the shape of orbital that contains this electron. जिस शेल के पास ये इलेक्ट्रॉन होगा ना, वो जिस ऑर्बिटल के पास ये इलेक्ट्रॉन होगा उस ऑर्बिटल की आपको डायग्राम बनानी है, ठीक है. तो उस ऑर्बिटल की डायग्राम बनाने के लिए आपको आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी बेटा. इफ यू गो अहेड एंड चेक आउट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन एन एटम ऑफ आर्गन, आई बिलीव आर्गन हैज 20 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. I'll have to go and look at the periodic table, but argon has an atomic number of 20 is what I remember, ठीक है. तो let's see the periodic table was here, ठीक है. um, yes, नहीं सॉरी, argon does not have 20 electrons, argon has 18 electrons, ठीक है. तो 18 electrons की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी बेटा यहाँ पे. um, ठीक है. तो आर्गन जो है उसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ठीक है. तो द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन दैट शुड बी रिमूव्ड should be from the orbital of p subshell, should be removed from the orbital of p subshell, right. So first electron should be removed from a p orbital, right. That is the concept, right. Outer shell electron से हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज होता है. तो जो पहला इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, पहला इलेक्ट्रॉन जो लूज हो रहा है वो कहाँ से लूज हो रहा होगा, वो पी के ऑर्बिटल से लूज हो रहा होगा. तो शेप ऑफ दैट ऑर्बिटल क्या होगी, तो यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर शेप ऑफ पी ऑर्बिटल. शेप ऑफ पी ऑर्बिटल बेटा आपके पास क्या होती है, डम्बल शेप, ठीक है. इट लुक्स लाइक दिस. अच्छा सा एक बना लेते हैं, ठीक है. दिस इज प्रीटी गुड, ठीक है. तो दिस इज अ डम्बल शेप, ठीक है. DUM
BELL, डम्बेल शेप। तो p ऑर्बिटल लुक्स काइंड ऑफ लाइक दिस, ठीक है। आई होप दैट मेक्स सेंस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सेज chlorine exists as a diatomic gas Cl2. A sample of Cl2 was made during a chemical reaction when measured at 404 kilopascals and 25 degrees Celsius. The sample occupied a volume of 20 centimeter cube. Calculate the mass in grams of Cl2 gas formed, ठीक है। तो beta, whenever so many values like pressure, temperature, and volume are given, always know that, always remember that you are going to have to need to use the general gas equation. You are going to have need the general gas equation or the ideal gas equation. They further strengthen our case by saying for this calculation, assume that chlorine behaves as an ideal gas. Why would we say that chlorine behaves as an ideal gas? We know chlorine is not an ideal gas, but we'll consider chlorine behaving as an ideal gas over here because this is going to require the formula of ideal gas, ठीक है। अच्छा, for ideal gas equation, first of all you need to know why we want to use the ideal gas equation। ये तो मैंने बता दिया कि it's common practice कि if pressure, temperature, volume etc are given, then ideal gas is always going to come, ठीक है। ideal gas equation is always going to come। लेकिन why is ideal gas coming over here? We want to calculate the mass, right? We want to calculate the mass। the formula of mass is equals to mole multiply by mr, ठीक है। मोल मल्टीप्लाई बाय mr। mr तो Cl2 का जो है वो बेटा क्या होगा, 35.5 टाइम्स 2 यानी कि 71 mr। तो इसका क्या कंसिडर किया जाएगा बेटा, 71 कंसिडर किया जाएगा। मोल हमें अभी नहीं पता, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन। तो आपके पास जो है आइडियल गैस इक्वेशन से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट आउट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो खैर आइडियल गैस इक्वेशन होती क्या है, यू शुड रिमेम्बर इट। आइडियल गैस इक्वेशन, इट्स आल्सो कॉल्ड आइडियल गैस लॉ। PV इज इक्वल्स टू NRT, ठीक है। PV इज इक्वल्स टू NRT, ठीक है। डाटा यहाँ पे आपको कलेक्ट करना पड़ेगा बेटा। प्रेशर जो गिवन है, प्रेशर जो गिवन है वो गिवन है 404 किलो पास्कल, 404 kPa, which will have to convert 404 kPa will have to convert, ठीक है। Why will it have to convert? Because हमें ये बात पता है कि जो ऐसा यूनिट्स होता है हमें उसमें लेना पड़ता है, ठीक है। प्रेशर हमें पैस्कल्स में लेना पड़ता है, यानी हम 404 इंटू 10 टू द पावर 3 पैस्कल्स कर देंगे इसको, ठीक है। सही है। वॉल्यूम जो है बेटा वो 20 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। यू वांट टू कन्वर्ट वॉल्यूम इनटू मीटर क्यूब। तो फ्रॉम गोइंग टू सेंटीमीटर क्यूब टू मीटर क्यूब, आई हैव टोल्ड यू यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 टू गो टू मीटर क्यूब, ठीक है। तो 20 इंटू 10 टू द पावर -6 हो गया। ये आपका वॉल्यूम हो गया। और टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना गिवन है, 25 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर वाज गिवन इन द क्वेश्चन एज 25 डिग्री सेल्सियस। you have to add you have to add 273। so can someone tell me what 273 plus 25 would be? I think it will be 298, but please कोई कैलकुलेटर लेके बैठ जाए, कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। 298 आ रहा होगा मोस्ट प्रोबेबली इफ यू ऐड 273 इन इट, ठीक है। The value of R is universal gas constant. You have to remember it. It's 8.31. And when is it 8.31? When the pressure is in pascals, the volume is in meter cube, and the temperature is in Kelvin. तो R की वैल्यू 8.31 होती है, ठीक है। तो खैर, from these equations we realize from these equations we realize that द क्वेश्चन इज नाउ वेरी इजी, ठीक है। अब आप यहाँ पे बना ले एक मार्जिन, अब आप निकालें कि सो एन इज इक्वल्स टू पीवी डिवाइडेड बाय आर टी, राइट। एन इज इक्वल्स टू पीवी डिवाइडेड बाय आर टी, ठीक है।
पी जो है प्रेशर है, प्रेशर कितना दिया हुआ है 404 × 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कितना है 20 × 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू बेटा 8.31 मल्टीप्लाई बाय 298। व्हाट विल बी द टोटल आंसर? वेयर इज माय कैलकुलेटर? 0.23 ग्राम। 0.23? 0.23 ग्राम कहाँ से आ गया बेटा? मोल पता करना है अभी तो। Sir, can we directly use the equation mr multiplied by pressure multiplied by volume divided by RT to get हाँ mass? मतलब, यस, मतलब आप जो है डायरेक्टली यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय एम आर कर सकते हैं। यस, यू कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय एम आर, देन यू विल बी गेटिंग द मास डायरेक्टली। बट ट्राई टू फाइंड द मोल्स फर्स्ट, ठीक है? मोल्स बता दें, उसके बाद हम लोग फिर उसको एम आर अलग से सेपरेटली कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैन समवन जस्ट ऐड दीज वैल्यूज टू अ कैलकुलेटर एंड लेट मी नो व्हाट द आंसर इज? एनीवन? 3.26 into 10 to the power minus 3. 3.26 into 10 to the power minus 3 moles. All right, ठीक है? So these are moles. So now we are going to find out the mass of Cl2 produced, ठीक है? ये कहाँ से आ गया? प्रोड्यूस, ठीक है? तो मास ऑफ Cl2 प्रोड्यूस कैसे निकालेंगे? मास इज इक्वल्स टू मोल मल्टीप्लाई बाय एम आर, ठीक है? मोल्स इज 3.26 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 71, ठीक है? व्हाट विल बी द फाइनल आंसर बेटा? 0.23 gram. 0.23 grams, ठीक है? तो द फाइनल आंसर विल बी 0.23 grams. Um, this is how you will calculate this question. ठीक है? Now moving on to the next question. Calculate the number of chlorine atoms in this sample of Cl2. You may find it helpful to use your answer to D part 1. If you are unable to calculate an answer to D part 1, use 0.36 grams of Cl2. This is not the correct answer. ठीक है? तो वो बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स कितने होंगे वो बता दें। ठीक है? तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे पता चल सकते हैं? बाय नोइंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है बेटा, देखो आपके पास फर्स्ट वी विल फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन। फर्स्ट वी विल फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन। ठीक है, तो बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने के लिए विच फॉर्मूला कैन बी यूज? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू मोल मल्टीप्लाई बाय एल। ठीक है, व्हाट इज एल? एल इज द एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, एंड मोल्स आपने अभी ऊपर कैलकुलेट किए थे। अगर आप डायरेक्टली मास कैलकुलेट करते तो यहाँ पे आपको मोल दोबारा कैलकुलेट करने ही पड़ते। दैट इज वाई कैलकुलेटिंग मोल्स वाज अ गुड आइडिया। ठीक है, तो खैर 3.6, व्हाट वाज इट, 3.26 into 10 to the power minus 3 multiply by 6.02 into 10 to the power 3। ठीक है, तो how many molecules will that make बेटा? 3.26 into 10 to the power minus 3 multiply by 6.02 into 10 to the power 23, because L की वैल्यू ये होती है। ठीक है, एवोगैड्रोस कांस्टेंट। जी, व्हाट इज द वैल्यू ओवर हियर? 1.96 into 10 power 20. 1.96 into 10 to the power 21 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सही है।
Now you should know that one molecule of Cl2, one molecule of Cl2 equals to two atoms, right? One molecule of Cl2 is two atoms, ठीक है? तो यहाँ पे तो हमें टोटल नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स पता करना है ना, तो हाउएवर मैनी मॉलिक्यूल्स देयर आर, हमें उसको 1.96 इंटू 10 टू द पावर 21 है ना, फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर कितने एटम्स होंगे, एक्स एटम्स होंगे, राइट? Therefore, x is equals to 1.96 into 10 to the power 21 multiplied by 2. So, how many atoms are there going to be? Roughly close to 2, right? 1.96 times 2 is 3.92 3.92. into 10 power 20. Yeah, 3.92 into 10 to the power 21, ठीक है? तो 3.92 into 10 to the power 21 atoms of chlorine should be there, ठीक है? This will be your final answer. I hope that makes sense. Now moving on to the next question. Cl2 does not behave as an ideal gas under these conditions. Explain why Cl2 behaves even less ideally at very high pressure. Very high pressure, why Cl2 will behave even less ideally? Because what are the conditions of ideal gas? We said that ideal gas is that gas in which the majority of the volume is empty space. Majority of the volume of gas is empty space. If we apply pressure, particles will come close together. Particles will come close together, and when particles come close together, their empty space, the empty volume of the volume of gas is decreased, ठीक है? तो हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि वेरी हाई प्रेशर पे, एट वेरी हाई pressure, the gas molecules come close together, and their volume becomes their volume of empty space, their volume of empty space डिक्रीजेस, ठीक है? तो उनका जो एम्प्टी स्पेस का वॉल्यूम है बेटा, वो डिक्रीज हो जाता है। उनके जो एटम्स हैं वो मोर सिग्निफिकेंट हो जाते हैं, ठीक है? तो ये आपकी बात हो गई। उसके अलावा अगर लो टेम्परेचर हो जाएगा, व्हाट हैपेंस व्हेन टेम्परेचर इज डिक्रीज, when temperature is decreased, the intermolecular forces of attraction are increased, ठीक है? तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। और हमने ये पढ़ा है कि इन आइडियल गैस देयर इज literally virtually no intermolecular force of attraction between gas molecules, ठीक है? So at lower temperatures, the intermolecular force of attraction between chlorine molecules अच्छा जी,
सॉरी बेटा, आई थिंक इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से आई वाज किक्ड आउट ऑफ द क्लास और समथिंग, बट लेट्स कंटिन्यू। तो हम ये बोल रहे थे, एट लोअर टेम्परेचर्स द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन between chlorine molecules increases, which is against the laws, right? It is against the law of, um, it is against the ideal gas laws, ठीक है? It is against the ideal gas law or kinetic particle theory. So we are going to say which is against the ideal gas laws, ठीक है? Can you guys see the screen and hear me clearly? Please let me know, ठीक है? um, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड वाई इज शोन। कंपाउंड वाई का स्ट्रक्चर शो किया हुआ है, ठीक है? गिव द सिस्टमिक नेम ऑफ वाई। व्हाट विल बी द सिस्टमिक नेम ऑफ वाई? इफ यू लुक एट वाई, वाई हैज थ्री कार्बन्स, ठीक है? सही है, वाई हैज थ्री कार्बन्स, एंड नाउ out of the three carbons, Y has one chlorine, ठीक है? Y has one chlorine on it and then one alkene on it, ठीक है? सही है? Now, in systemic naming, the halogen is less preferred compared to the alkene because alkene is part of the main chain, ठीक है? सही है, तो it is preferred more. तो this will have the first carbon number, this will have the second carbon number, and this will have the third carbon number. There is no branch, there is only one chlorine as a branch. So we're going to say the name is going to be 3 chloro prop 1 ene, ठीक है? 3 chloro prop 1 ene. This will be the systemic name of this alkene, ठीक है? अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रिडिक्ट द वैल्यूज ऑफ बॉन्ड एंगल्स ए एंड बी शोन इन द डायग्राम। ए और बी के बॉन्ड एंगल्स बताने हैं बेटा। तो ए का बॉन्ड एंगल क्या होगा? द कार्बन ऑन ए, द कार्बन ऑन ए इज अ टेट्राहेड्रल कार्बन, राइट? दिस इज अ टेट्राहेड्रल carbon. How do I know this is a tetrahedral carbon? Because it is making four bonds, and we know that carbon does not have any lone pairs. So tetrahedral carbon with four bonds is going to have a bond angle of 109 degrees, right? तो उसका bond angle क्या होता है? 109 होता है, या 100, 109.5 या 109 होता है, कोई एक वैल्यू होती है एग्जैक्ट, ठीक है? अच्छा, दैट इज the bond angle for this carbon, right? This angle, ये angle 109.5 होगा। अच्छा, what about this carbon? ठीक है, this carbon is not bonded to four different elements, it is only bonded to three different elements, ठीक है? Now if something is bonded to three different elements and has no lone pair, it has what we call the trigonal shape, right? Trigonal geometry. Trigonal geometry, ठीक है? Trigonal geometry is geometry in which the bond angle is 120 degrees, ठीक है? Trigonal के अंदर bond angle कितना होता है बेटा? 120 degrees होता है, सही है? तो the bond angle over here will be 120 degrees. I hope that makes sense. Now the next question, when Y reacts with cold dilute acidified manganate 7 ions, compound Z is produced. Z is produced when Y reacts, all right? तो अच्छा, दिस इज वाई, राइट? या, तो बिल्कुल दैट इज 100% ट्रू, ऐसा ही होगा। स्टेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ जेड। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ जेड क्या होगा बेटा? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ जेड बहुत सारे तरीकों से लिखा जा सकता है, इट डजेंट रियली मैटर, लेकिन यूजुअली हमेशा कार्बन से शुरू करते हैं। तो तीन कार्बन ही है, तीन कार्बन ही रहेंगे बेटा। फिर पहले कितने हाइड्रोजन्स थे? पहले 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन्स थे, राइट? ठीक है, 5 हाइड्रोजन्स थे। तो आप लिख दोगे C3H5 और अब दो और 7, ठीक है? तो H7 C3H7, क्लोरीन एक ही था, अभी भी एक ही है, एंड टू हाइड्रोजन्स, तो टू ऑक्सीजन्स, तो O2, ठीक है? तो C3H7ClO2, ठीक है? यू कैन राइट दिस एज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सही है? व्हाई डिड आई नॉट राइट एवरीथिंग सेपरेटली? बिकॉज इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला you just count every element, how many times it is, and you write it down, ठीक है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस तरह होता है। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज अकर्ड व्हेन y is converted into z। जब y को z में कन्वर्ट किया है, व्हाट हैव वी रिएक्टेड इट विद?
cold acidified magnate ions. Magnate ions are what? Magnate ions are oxidizing agents, right? These guys are who? These are oxidizing agents, the most famous, the strongest oxidizing agents to ever exist. um, ते तो यानी कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, तो यानी कि ये रिएक्शन कैसा रिएक्शन होगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। ऑलराइट, सो दिस रिएक्शन विल बी कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है। Alcohol can be classified as primary, secondary, or tertiary. Identify with a tick along tick. Identify with a tick the alcohol groups present in Z. क्या primary alcohol present है? तो जवाब है बिल्कुल present है। This alcohol is joined to a carbon which is only joined to one carbon, right? तो इस पे दो हाइड्रोजन और लगे हुए होंगे, right? जैसा कि आप देख सकते हैं कोने वाले कार्बन पे दो हाइड्रोजन ऑलरेडी लगे हुए हैं, उस पे एक OH आके लगा है, राइट? तो आपके पास जो है अगर समझ नहीं आ रहा तो चलो बेटा मैं ऐसे बना के दिखा देता हूँ। क्लोरीन, कार्बन, 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 ठीक है। आ, एक और दो हाइड्रोजन इस पे लगे हुए थे, ठीक है। एक हाइड्रोजन इस पे लगा हुआ था, ये डबल बॉन्ड था, ठीक है, और दो हाइड्रोजन इस पे लगे हुए थे। सही है। जब आपने इसका एसिडिफाइड KMnO4 से कोल्ड KMnO4 से रिएक्शन कराया तो क्या होता है कि डबल बॉन्ड टूट जाता है और एक OH इधर लग जाता है और दूसरा OH किधर लग जाता है? इधर लग जाता है, ठीक है। नाउ इफ यू लुक एट दिस OH, दिस इज प्राइमरी। व्हाई इज दिस प्राइमरी? बिकॉज ये जिस कार्बन से ज्वाइंट है, ओनली वन बॉन्ड इज फॉर्म फ्रॉम दैट कार्बन टू अनदर कार्बन, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल कौन है? इन विच द कार्बन ज्वाइंट विद हाइड्रोक्सी ग्रुप is only joined to one more carbon atom, ठीक है, that is a primary alcohol. And then this is a secondary alcohol. How do I know that this is a secondary alcohol? Because the carbon that is joined to carbon that is joined with this hydroxy is joined to two other carbon atoms. It is joined to two other carbon atoms. So this means that there is a primary alcohol here, over here, and a secondary alcohol over here, but no tertiary alcohol. ठीक है, primary alcohol and secondary alcohol, but no tertiary alcohol. So we're not gonna put a tick on tertiary. ठीक है। Next question says samples of organic compound A, B, C, and D are placed in unlabeled bottles. ठीक है। CH3, CH2, CO, CH3. ठीक है। This looks like a ketone. Um, CH3, CH2 whole twice CHO. This is aldehyde. CHO जब भी लिखा होता है aldehyde होता है। CH3, CH2OH. This is alcohol. ठीक है। And CH3, COOH. This is carboxylic acid. This is carboxylic acid. ठीक है। तो aldehydes and ketones are carbonyl compounds. ये बात याद रखिएगा। Aldehydes and ketones are carbonyl कंपाउंड्स, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन को बेटा कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज एन एल्डिहाइड। CHO proves that it is an aldehyde, ठीक है। और इस तरह से बेटा एक सिंगल ऑक्सीजन लगा हुआ होता है ना, तो हमारे सिलेबस में ये कीटोन होता है। ये क्या होता है? कीटोन होता है। तो ये हमारे पास कीटोन है। दिस OH shows that it is an alcohol and this CO2H shows that it is a कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अच्छा, तो ए एंड बी आर दी कार्बोनाइल कंपाउंड्स, तो ए एंड बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। Now the next question is A, D are reacted separately with reagents given in table. Complete the table to identify which of the compounds A to D reacts with the reagents. Given appropriate observation when reaction occurs. What the appropriate observation will be when the reaction occurs? Tollens reagent. Tollens reagent, if you remember, Tollens reagent was used to test for aldehyde, sorry, ठीक है। तो टॉलेंस reagent जो है ये किसके लिए होता है? फॉर एल्डिहाइड्स, फॉर एल्डिहाइड्स, ठीक है। तो टॉलेंस रिएजेंट एल्डिहाइड्स के लिए होता है। इसके अंदर एल्डिहाइड आपके पास कौन है? बी है। तो कंपाउंड्स आइडेंटिफाइड बी विल रिएक्ट ओवर हियर, ठीक है, बी विल रिएक्ट ओवर हियर। एंड व्हाई विल बी रिएक्ट ओवर हियर? बी विल रिएक्ट बिकॉज
B contains the aldehyde group. Observation when a reaction occurs. We don't have to write why it will react. We will say what is the observation. तो टॉलरेंस reagent basically silver mirror test कहलाता है, ठीक है. तो we'll say precipitate of silver. Precipitates of silver is produced. ठीक है. The very famous terminology silver mirror forms. सही है. This could be the observation. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है. अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन. अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इज विजिबल इन कीटोन्स विद अ CH3. ठीक है. मिथाइल कीटोन्स. मिथाइल कीटोन्स के अंदर आपके पास जो है अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन यूज करते हुए, जिसे हम आयोडोफॉर्म टेस्ट कहते हैं, आयोडोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं, वो यहाँ पे यूटिलाइज हो रहा होता है, आयोडोफॉर्म रिएक्शन. ठीक है. तो आई थिंक इसका आंसर ए है. ठीक है. और आयोडोफॉर्म रिएक्शन के अंदर एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट ऑफ आयोडोफॉर्म बन रहा होता है, whose फॉर्मूला इज CHI3. ठीक है. तो येलो precipitate of CHI3 is observed. सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन सोडियम मेटल. सोडियम मेटल जो है, अच्छा ये तो था फॉर मिथाइल कीटोन्स. फॉर मिथाइल कीटोन्स. ठीक है. Now the next question says sodium metal. Sodium metal is used for reaction with carboxylic acid, right? Carboxylic acid and alcohol as well, right? Carboxylic acid और alcohol दोनों ही strong metal से react करेंगे. Why will alcohol react? Because alcohol भी ये H हट जाता है alcohol में भी. ठीक है. सही है. और कार्बोक्सिलिक एसिड में तो आपके पास जो है एसिड ही है, तो सोडियम मेटल रिएक्ट करेगा. तो दोनों के दोनों एसिड की तरह एक्ट करेंगे. जब मेटल प्लस एसिड होता है तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बनती है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन. ठीक है. अच्छा. तो यानी कि यहाँ पे C and D बोथ विल रिएक्ट. C and D both will show positive result, and C and D both if they show positive result, what will we say? Effervescence. SCENC, effervescence. Once again, hydrogen is a colorless gas. Effervescence of a colorless gas which produces squeaky pop sound when ignited splint is brought near it. फुल स्टॉप. ठीक है. तो एफरवेसेंस होती है बेटा, और अगर इग्नाइटेड स्प्लिंट को करीब ले आओ तो एक्सप्लोसिव धमाका वाला पॉप साउंड आती है. ठीक है. इट प्रोड्यूसेस स्क्वीकी पॉप साउंड बिकॉज H2 is very combustible and explosive. All right. Next question says ethanol reacts with a mixture of HCN and NaCN to make 2 hydroxy propane nitrile CH3CHOHCN. The reaction mechanism is nucleophilic addition reaction. We know what this reaction is. ठीक है. Aldehyde का reaction with HCN, it produces hydroxy nitriles. ठीक है. Explain the meaning of term nucleophile and identify the species which act as a nucleophile during the reaction. ठीक है. तो nucleophile कौन होता है? Nucleophile basically ऐसी species को कहते हैं which is attracted to a positive charge. ठीक है. तो nucleophile, wait, nucleophile does not have U. Nucleophile is a species which is attracted to electron
deficient group as it itself is इलेक्ट्रॉन रिच, या तो किसी से इलेक्ट्रॉन छीना हुआ होता है, या फिर और हैज अ लोन पेयर। ठीक है, या तो न्यूक्लियोफाइल के पास खुद इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, या उसके पास लोन पेयर होते हैं। इन बोथ कंडीशंस इट इज एक्टिंग एज एन इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, सही है। अच्छा जी, तो द नेक्स्ट पार्ट, स्पीशी विच इज एक्टिंग एज ए न्यूक्लियोफाइल whenever we are reacting HCN with NaCN in मतलब लिटिल कॉन्सेंट्रेशन, तो ये एज अ कैटलिस्ट यूज कर रहा होता है। HCN जो है वो बेसिक रिएक्टेंट होता है। HCN के अंदर पार्शियल पॉजिटिव H होता है, और CN इज द पार्शियल नेगेटिव। तो पार्शियल नेगेटिव जो है वो आपका न्यूक्लियोफाइल होगा। तो CN अलग से जब न्यूक्लियोफाइल बनता है तो वो इस तरीके से दिखता है। ठीक है, तो CN इज योर न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। CH3, CHOHCN exists as a pair of stereoisomers. Name the type of stereoisomerism shown by CH3, CHOHCN. ठीक है, तो बेटा स्टेरियोआइसोमेरिज्म दो ही किस्म की होती है आपके पास, एक ऑप्टिकल और दूसरी ज्योमेट्रिकल, राइट। ठीक है, the reason why I chose optical first is because this is going to be optical isomerism. How do I know this? Because geometrical occurs in alkenes और यहाँ पे कोई अल्कीन नहीं है, और ये अकर होती है occurs in chiral compounds, राइट। और ये chiral compound होता है। हाउ डू आई नो ये chiral compound होता है? बिकॉज अगर मैं यहाँ पे ये डायग्राम बनाऊं, तो द डायग्राम लुक्स लाइक दिस: कार्बन, हाइड्रोजन, OH, CN, CH3। All right, बेटा this is exactly your uh, this guy, जिसका नाम क्या था, हाइड्रोक्सी प्रोपेन नाइट्राइल, आई थिंक। हाइड्रोक्सी प्रोपेन नाइट्राइल जी। तो हाइड्रोक्सी प्रोपेन नाइट्राइल ये है। तो इसके अंदर आपके पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो रहा होगा। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है ड्रॉ थ्री डायमेंशनल डायग्राम ऑफ दिस ड्रॉ थ्री डायमेंशनल डायग्राम ऑफ दिस पेयर ऑफ स्टेरियो आइसोमर्स। तो इस पेयर का स्टेरियो आइसोमर आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, और आप उसको बोला हुआ है कि एस्टेरिक लगा दें ऑन द कायरल सेंटर, यानी कि बीच वाले कार्बन पे एक स्टार लगा हुआ होना चाहिए। ठीक है, प्रूविंग दैट वी नो व्हाट द कायरल सेंटर इज। ठीक है, आई मीन दिस इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये बात कैसे भी पता चल गई क्योंकि नीचे पूछ लिया कि इसके अंदर कायरल सेंटर होगा। ठीक है, दैट वाज वेरी इजी। खैर, दिस क्वेश्चन इन फैक्ट इज ऑल इन ऑल वेरी इजी। आपको क्या करना होता है, एक मिरर लाइन ड्रॉ कर लें स्टार्ट में पेंसिल से। ठीक है, ताकि आपके लिए आसानी रहे। अब आप एक तरफ अम, अपना कंपाउंड बनाना शुरू कर देंगे। द कंपाउंड विल लुक लाइक दिस: कार्बन, और आपने यहाँ पे बना दिया हाइड्रोजन, और यहाँ पे आपने बना दिया CH3। ठीक है, अब आपने थ्री डायमेंशनल फिगर करनी है, तो थ्री डायमेंशनल फिगर इधर कर लें। उप्स, थोड़ी कलरिंग करनी पड़ेगी बेटा यहाँ पे। ए, और इस पे हम बना देते हैं OH। ठीक है, और दूसरे वाले पे हम बना देते हैं CN। ठीक है, सही है। अब इसका ऑप्टिकल आइसोमर बनाना है आपको, तो कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ मिरर इमेज करनी होती है। हाइड्रोजन मिरर में ऊपर ही रहेगा, CH3 अब इस तरफ चला जाएगा। ठीक है, द OH विल कम हियर।
तो इसके ऊपर आप बना लेंगे OH। सिर्फ और सिर्फ मिरर करना होता है बेटा। CN, ठीक है, मिरर इमेज। इट इज दैट इजी। All right, तो this is how you will draw the optical isomers, ठीक है। Try and make them look as mirror as possible। जैसे कि मेरा इतना ज्यादा मिरर नहीं लग रहा, because this CN is coming straight, ठीक है। ये थोड़ा सा tilted नीचे की तरफ था, इस CN को भी नीचे होना चाहिए था, इस OH को थोड़ा इधर होना चाहिए था। बट इट्स ओके, नो वरीज, ये भी सही ही कंसिडर किया जाएगा। So I want to, I could just rotate it a little bit like this। और तो आपका जो है मोस्ट प्रोबेबली बन जाएगा। We could go like this and just rotate it a little bit and चलो ये थोड़ा सा बेहतर हो गया, ठीक है, सही है। Alright, next question। Give the structure of the organic product of the reaction of CH3CHOHCN with dilute sulfuric acid। अगर dilute sulfuric acid से रिएक्शन करते हैं हम लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का, तो क्या कंपाउंड बनेगा, क्या कंपाउंड हमारे पास बनेगा, ठीक है। देखें बेटा, लेट्स हैव अ लुक। हमारे पास जो CH3COH और CN है, अगर ये H2SO4 से रिएक्ट करता है, अगर ये H2SO4 से रिएक्ट करता है, तो कंपाउंड हमारे पास क्या बनेगा, what should be the compound, ठीक है। तो this was I believe it was written in the chapter of nitriles। sulfuric acid reacts with nitrile compounds, ठीक है, और carboxylic acid में कन्वर्ट करेगा वो उसको, ठीक है, it will convert it into carboxylic acids, ठीक है। तो हमारे पास जो कंपाउंड बन जाएगा, वो कंपाउंड हमारे पास, ये नाइट्रोजन हटेगा और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। तो द कंपाउंड विल बिकम CH3COOH। आई बिलीव ये कंपाउंड बनना चाहिए, एंड साथ में सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है। काउंट करते हैं, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। कार्बन्स तो हमारे बैलेंस्ड हैं, ठीक है। बाकी प्रोडक्ट्स तो हमें लिखनी भी नहीं है, सिर्फ यही मेन प्रोडक्ट लिखनी है। द नाइट्रोजन विल गेट रिमूव्ड। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। आई एम जस्ट थिंकिंग, ये OH जो है, द OH रिमेन्स, आई थिंक इट्स इन द नोट्स, वेट लेट्स कंफर्म, ठीक है। यस, तो व्हेन यू यूज एन एसिड ऑन नाइट्राइल्स, ठीक है, तो आपके पास जो है कार्बोक्सिलिक एसिड बनता था, बट वो तो खाली नाइट्राइल्स थे। तो व्हाट अबाउट हाइड्रोक्सी नाइट्राइल्स? तो आई थिंक अच्छा सही है, तो हाइड्रोक्सी नाइट्राइल्स विल रिमेन हाइड्रोक्सी, ठीक है। हाइड्रोक्सी नाइट्राइल्स जो है उनमें हाइड्रोक्सी रहेगा। तो ऑलराइट, तो जो OH था वो OH मेंटेन रहेगा। वेट अ सेकंड, वेयर डिड P2 गो? ऑलराइट, तो आखिरी वाले पे तो नाइट्रोजन हटेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड लग जाएगा, ठीक है, दैट इज फैक्ट। एसिड हाइड्रोलिसिस होती है। जो इस कार्बन पे OH है, वो OH यानी कि रहना चाहिए, ठीक है। तो द गिव द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो अब इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कैसे करेंगे? इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ ऐसे करना पड़ेगा, CH3
CH, ब्रांच में OH है यहाँ पे, और आखिर में COOH है, ठीक है, सही है। तो दिस इज हाउ दिस प्रोडक्ट कैन बी रिटन, CH3CH, branch में OH and COOH, and this is your answer. And with that, this year's past paper is also completed, ठीक है। Do you guys have any questions?